Hey, hi everyone. Uh, Good evening. This is day five of our live session series, and we are back again. Uh, I was thinking like what to start with. क्या कहाँ से हम start कर सकते हैं? क्या आज नया कर सकते हैं? Because I have lot to share, but वो structure wise में how I can put it and how I can make it more valuable for you people also. Okay, so if I put it in a simple and understanding manner, I think that will be much more effective rather than just talking about anywhere. So I'm finding some structure now. It's getting better also, but let's talk about some again around the AI and आज मैंने सोचा कि I will talk about the ACL rehab also because it's very one of the common injuries जो हम as a physiotherapist देखते हैं या फिर किसी भी एक जनरल एथलीट के लिए या किसी एक एक्टिव पर्सन के लिए the ACL injury can be a very big thing and sometimes जो डिसीजन मेकिंग होता है सही समय पर सही डिसीजन लेना that is I think more important rather than going for some very complex and advanced things. Sometimes easiest of simplest of thing can offer you many good results, but things need to be done the right way. Things need to be done something somewhere around the right thing rather than just trying anything out of the box. So I will try to give you people some of structure जहाँ पे आप उन resources का use कर सकते हो and also you can try to uh, get give best of value to the people who are suffering from the ACL injury itself. And yep, that's the thing. As a physiotherapist, we may see a lot many injuries, चाहे वो knee हो, चाहे वो shoulder हो, चाहे वो back pain हो. It can be anything. How do we know that what needs to be given and what is the right thing to go for? ठीक है? How we really, how can we really come across thing that okay, this is the perfect thing for a person and this needs to be given at this time? Okay, that is a part of clinical decision making, I will say. So for that, I will say it is more important to understand कि what are the evidences around it right now. Evidence का मतलब ये होता है कि क्या प्रूफ है या फिर क्या उस चीज के सपोर्टिंग में या फिर नॉट इन सपोर्ट. what are the what are the information currently available, वो चाहे रिसर्च बेस्ड हो, रिसर्च के थ्रू ही बेसिकली बिकॉज वी आर इन अ साइंटिफिक प्रोफेशन. इट इज साइंस ऑलवेज डिमांड्स proof. Science always demands inquisitiveness. That means trying to reach towards truth. या फिर trying to understand the truth. Not with the fallacies, not with the uh, being so strong in your conviction, but to test the hypothesis. You form some hypothesis और उसके around आप उसको refute करने की कोशिश करते हो. That is what science is about. ठीक है? You aim for a research to refute your hypothesis or what you are currently believing in. So yeah, that's what science is. और वहाँ that's the part from where we usually get our all the evidences. साइंस के थ्रू ही, साइंस के माध्यम से ही हम अपनी जितनी भी सच जानने की जो इच्छाएं होती है, जब हमको हमको अगर किसी चीज के बारे में जानना है कि व्हाट इज बेस्ट, क्या सही है क्या गलत है, साइंस इज वन वे टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है? एंड एंड फिजियोथेरेपी ऑल्सो, क्या क्या बात किस कौन सा बात किस पेशेंट के लिए या किस इंजरी के लिए सही रहेगा. आई थिंक विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च वी कैन अंडरस्टैंड कि हम किस रास्ते पे हमको मूव करना है. सेकेंड थिंग, योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस. जो मैं अभी बात कर रहा हूँ दैट इज मोर अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप रिसर्च पढ़ो और उसको अप्लाई करते रहो. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल पार्ट्स एंड इसमें से एक रिसर्च, ऑब्वियसली रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है. उसी के साथ साथ आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपके जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जिस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया है, आपने जिस तरह की लर्निंग्स गैदर की है फ्रॉम clinical interaction, that is also part of evidence based practice, but you need to, it is a hierarchy. Okay, you need to put foundation on the what is already available
Second, you need to form your own clinical practice. Third is the patient opinion and belief. What patient considers best. That is not be the best thing, but yeah, you need to filter out things and then work around basically to give the patient best of value. ठीक है, तो हम ACL rehab के बारे में उसी तरह से बात करेंगे. We'll use AI also because I think that is one of the thing which I always believe gonna help us in a long term to understand, to utilize the human potential or that information, the gem of information in the best way. ठीक है. ACL is a ligament which is there in your knee. ठीक है, anterior cruciate ligament, and ये एक प्राइमरी रिस्ट्रेंट होता है फॉर द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ योर टिबिया ऑन और योर फीवर. आपकी जो लेग को जो सपोर्ट देता है, फॉर जो स्टेबिलिटी देता है एक तरह से, लिगामेंटस स्टेबिलिटी या पैसिव स्टेबिलिटी जैसे हम कहते हैं. पैसिव स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. जब दो बोन्स अपने आपस में जुड़ी हुई हैं, the structure which are giving it passive stability without any muscle contraction involved, that is what passive stability means. ठीक है. Usually the restraints are capsule, ligaments around it, and ACL is one of the many ligaments out there in knee. Knee is inherently unstable, and but जो ACL ligament है, that is one of the major restraint जो movement के अंदर आपको stability देता है. Now, it is injured so commonly. It is one of the structure which is very frequently injured, and the rehab follows it also very long and tedious. तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि you are following the right path. You are always taking you are always going for clinical decision making in best way possible, जिससे जो आउटकम्स हैं वो डिले ना हो, जिससे जो रिकवरी पाथ है वो अल्टर ना हो. ठीक है. सो let's start with the I will share my screen and let's start with some most like which helped me a lot, and I think which is helping a lot of many people out there to put the information or put the research in concise way. And Mick Hughes is one of the good personalities out there who are working really great in ACL rehab, and he has created something which is Melbourne ACL guide. तो हम वहाँ से start कर सकते हैं, and then we can move forward in to understand other things well also. So give me a second. I will open the PDF and then we can discuss one by one. ठीक है. This is the Melbourne ACL guide जो you can follow if you are a physiotherapist watching right now. I am again tilting towards the physio profession. I'm still trying to I'm still in a process to find the niche key where we need to lean in future. But right now, this video is more of for the people who are in physiotherapy and especially who are a physiotherapist, so that we can really get hands-on things to the best of the resources available. So yeah, if you are not a physio also, you can continue with watching this, so you can get some understanding. अगर आपको help आपको समझना हो कि हाँ how ACL rehab can work. ACL is very common. आप अगर Instagram follow करते हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा कि मेरा ACL injured हो गया और something like that. तो you can always take help from this. So this is ACL Melbourne ACL Rehabilitation Guide 2.0, which was developed by Randall Cooper and Mick Hughes. इन्होंने 5 phase के अंदर they have divided some phases: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. That's how rehab is always done. And yep, so pre-op, phase 1 to recovery from surgery, strengthen neuromuscular control, running agility and landings, and then 4, return to sport, which is very much aspired for people or athletes who have injured their knee. जब आपसे आपका इंडिपेंडेंस छीना जाता है, जब आपसे आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट छीना जाता है, द ओनली थिंग यू वांट टू गेट बैक दैट. ठीक है, बिकॉज दैट गिव्स यू मीनिंग इन योर लाइफ. सो रिटर्निंग टू the same level where you were earlier is one of the major dream or major outcome people want once they have injured their knee. But trust me, it is a very hard path. That not hard as such in such of achievement, but
things which needs to be done at the right time, at the right place, and with the right amount of intensity, those things are very important to reach up to where you want to be. And last is the prevention of injury. This is phase 5. So, yep, if we do at least all these simplest of things also in a good way, in a progressive manner, fulfilling all these test values also, it is very much possible कि आप return to play, at least not return to sport with a competitive nature, with the full performance. That is another different story, but you will be able to achieve most of the things in a good manner अगर आप ये follow कर पाते हैं through the whole good amount of time during rehab. So it has multiple phases. Phase 1, phase 2. Phase 1 is more about getting your recovery from surgery. इससे पहले भी जो phase आता है, that is injury pre-op phase, which is injury readiness and recovery. Once you get injured, you need to eliminate swelling, you need to get full of range of motion, and you need to get the full strength in both legs. That is the first part. Second part is more about getting the knee straight, settling the swelling, getting your quadriceps fired. ये second step होता है, and once you are out of this phase, you are having a happy knee in your phase of the rehab. ठीक है, हैप्पी नी का मतलब है आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट है, आपका पेन बिल्कुल बिल्कुल खत्म है एक तरह से, आपकी डबल लेग स्ट्रेंथ, आप दोनों पाँव के ऊपर बेसिक मूवमेंट्स कर पा रहे हो, आप वेट बेयरिंग अच्छे से कर पा रहे हो, there is no limping involved, your gait is improved. That is a state which is, and your quadriceps are firing, your muscles are not inhibited. These 5 things, if you're doing well, you are in a great state or you are in a happy knee condition. यहाँ से हम जब आगे जाते हैं, that is like now then we can go for surgery. If you are not going for surgery also, rehab is same. Phase 1, phase 2, phase 3, we follow in that way only. So these are the few outcomes we need to improve: passive knee extension, passive knee flexion, swelling and strength. ये 4 चीजें अगर हम अच्छे से कर पा रहे हैं, we are ready to move to the phase 2. That is about getting strength and neuromuscular control. Phase 2 is more about regaining single leg balance, regaining muscle strength, single leg squat with good control. अगर ये 3 चीजें, which is very much of single leg stability, if you are able to achieve, I think that is again a good part from where we can move to the phase 3. Phase 2, again यहाँ पे कुछ parameters है जो आपको fulfill करना है, उसके बाद I think you will be more probably be allowed to for the phase 3. Phase 3 is about running agility and landings, which is about getting excellent hopping performance, agility program, full strength and balance. If you are a person who is into sport, which is in a dynamic sport, जहाँ पे contact required है, जहाँ पे dynamic movement required है, जहाँ hopping, landing, all these things are involved, you need to go through with those stages. That is a phase 3. Again, यहाँ पे कुछ tests हैं जो आप fulfill कर सकते हैं और उसके बाद आप you can really go back to the things. Return to 4, that is last phase, that is return to sport criteria. Again, this is more about feeling confident, like that you can return to sport. There are certain sheets also जो आप use कर सकते हैं for clearance, clearing a person to return to sport. This is not enough. This is not. It can be all comprehensive also, but this is the minimum at least you should do if you are going for if you are doing a ACL rehab itself. And the injury prevention program is in place. आपको पता है कि आपको किस तरह से उस चीज को prevent करना है in future. That is another thing I think you need to go for. Great. So this was the Melbourne ACL protocol. ये बहुत detailed है, बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है. So if you are a physio, please do check out this resource, and I think you will be getting most of the value out of things if you want to improve your ACL rehab for sure. एक और जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है या फिर एस्पेटार, अगर आप नहीं जानते हैं तो एस्पेटार इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जो स्पोर्ट साइंस और स्पोर्ट इंजरीज के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव गुड टीम ऑफ द पीपल, दे हैव डूइंग रियली गुड रिसर्चेस आल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल जो उन्होंने बनाया है फॉर एसीएल रिहैब. एंड ये बहुत डिटेल्ड है, ये बहुत loaded hai with information. So I will give you, I will advise you people also to go with the thing. If you are a therapist, for sure you need to go with this key to understand also ki how things can be so detailed, so individualized, so specific and objective outcome,
And yeah, this talks about the multidisciplinary team responsibilities. आपको किस तरह से ब्रेक डाउन करना है चीज़ों को, कहाँ कहाँ किस तरह से को आपको ध्यान रखना है, केपीआईज क्या होने चाहिए, ठीक है। असेसमेंट लैब अगर आप कर रहे हो तो किस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कब आपको कौन कौन से टेस्ट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। काउंटर मूवमेंट जंप्स हो गई, डबल लेग जंप्स हो गई, सिंगल लेग हैंड एनोमीटर, जो सिंगल लेग हैंड एनोमीटर वैल्यूज हो गई, लिम्ब सिमेट्री इंडेक्स हो गया। देयर मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग। सो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस देगा जिसके थ्रू आप चीज़ों को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। So do check out this one also. This is Aspetar ACL reconstruction guide. First one was the Melbourne ACL guide जो आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। इसके बाद जो 3 पेपर्स आते हैं, दैट इज बाय बकथ्रॉप, मैथ्यू बकथ्रॉप। इन्होंने अर्ली स्टेज, मिड स्टेज एंड देन लेट स्टेज, तीनों स्टेज के अंदर व्हाट हाउ वी कैन बेस्ट ऑप्टिमाइज द एसीएल रिहैब, उन्होंने 3 अच्छे अच्छे आर्टिकल्स रिलीज किए थे। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट बेटर विद योर रिहैब अगेन। अब आई कैन अंडरस्टैंड दिस कैन बी ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल पीपल, हाउ टू मेक दिस इजियर, ठीक है, हाउ टू मेक दिस इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल और efficient to use. For that, we're gonna use AI. So this is for all you people, which I just I need to share it again, I think. Yeah. So this is the thing. I think I used notebook LM this time. मैंने notebook LM यूज किया। notebook LM, I told you, it's a place जहाँ पे आप जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद what it will do, it will create a डेटा सोर्स जहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझे पूछना है व्हाट इज द बेस्ट टाइमलाइन फॉर ए एथलीट टू रिटर्न टू स्पोर्ट फॉलोइंग ACL injury along with meniscus. So if I ask him it the question, ये क्या करेगा, इसमें से जितना भी इसके पास डेटा है, जितना भी इसके पास हमने मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये उसमें जाएगा और वहां से चीजों को देख के, वहां से चीजों को समझ के इट विल ट्राई टू आंसर एंड इट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स ऑल्सो कि कहाँ से ये रेफर कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड रिसोर्सेस, there is no timeline as such, criterion based progression उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको करना है। 9 to 12 months का हो सकता है, and 9 months at least you need to go for it, and yeah, you need to meet the return to sport criteria। टाइम फ्रेम बताया, फिर मेनिस्कस इंजरी के साथ साथ कैसे चीजों को एडजस्ट करना है, किस तरह चीजों को मेंटेन करना है, दैट इट प्लेस क्राइटेरियन बेस्ड प्रोग्रेशन होना चाहिए। मतलब टाइमलाइन बेस्ड इज नॉट द राइट नाउ थिंग, इट नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, दैट इज द थर्ड थिंग। एंड 4 रिटर्न टू स्पोर्ट क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। आई थिंक दैट्स हाउ यू नीड टू प्रोग्रेस। अब आप इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने हर चीज का एक सोर्स गाइड दिया है कि आप इन्होंने कहाँ से चीजों को लिया है, किस तरह चीजों को बनाया है। जैसे ये वाला सोर्स गाइड मेलबर्न एसीएल गाइड से था, ये वाला जो था फ्रॉम 23 इट वाज फ्रॉम दी ऑप्टिमाइजिंग द मिड स्टेज एसीएल रिहैब। तो इन्होंने यहाँ से इस चीज को पुल आउट किया। So that's the thing. I think it's really so comprehensive. It is really easy to use। आपको सिर्फ अपने जो रिसोर्सेज है यहाँ पे इसको डालना है, उस डालने के बाद आपको यहाँ पे जाके सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। आपको क्वेश्चन पूछना है और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके आपको आंसर बना के देगा। सिंपल एज दैट। आपका जीनी की तरह काम करेगा अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो। एक और जो चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई विल से दैट इज योर माइंड मैप। अगर आप ये देखेंगे, आई यूज द माइंड मैप, आई यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ माइंड मैप नाउ। तो माइंड मैप क्या होता है, एक तरह से this you can hold this thing, you can consider as the mind of the data which you have provided। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसका एक तरह से इन्फो लाइक नॉट इन्फो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हमको देखना है इंफॉर्मेशन का सिंपलेस्ट वे में, दिस इज द बेस्ट वे टू मेक द कंटेंट। ACL रिहैब, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीस डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हमने दिया है।
एस्पेक्ट प्रोटोकॉल है, एविडेंस बेस्ड प्रोग्रेशन कैसे करना है, मेलबर्न एसीएल गाइड क्या कहता है, ऑप्टिमाइज लेट स्टेज, मिड स्टेज, आई थिंक लेट स्टेज का इसमें आया, प्लाइमेट ट्रेनिंग कैसे करना है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 10 टास्क प्रोग्रेशन क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर। हम मेलबर्न एसीएल गाइड पे क्लिक करते हैं, sorry, things which we discussed, phases of validation, pre-op phase, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, prevention, Mailbin sheet and assessment tools and everything. अगर आप phase 1 पे click करते हैं, what are the important things? These are the important things. Then अगर आप phase 2 पे add करते हैं, then these are the goals, these are the step and this assessment. Everything is so detailed, everything is so smooth, and this is from one single click. आप इसको access कर सकते हो, and this can make your whole learning process so simpler and so effective. This is the magic of AI. This is the magic of doing things with ease, and I am pretty much sure that अगर आप ये use करते हैं, you will get more of the benefits. यहाँ पे there's something which is known as audio podcast also. आप जो भी ये जो हमने बनाया है, जो भी information हमें दी है, उसका हम podcast बना सकते हैं। अगर आप सुनोगे इसको, See, it is so amazing that you are able to create an audio podcast और हिंदी में भी होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ इसको डालना है यहाँ पे अपना जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको सिर्फ़ यहाँ पे जाके क्लिक करना है, ये आपको हिंदी में अच्छे से बना के देगा। बढ़िया पॉडकास्ट आपको जैसा सुनना है, आसान समझना है, थोड़ा-सा इसको टेक्निकल बनाना है, आप उसको प्रॉम्प्ट दो और यू विल गेट द रिज़ल्ट आउट ऑफ इट। देयर इज़ अ इंटरैक्टिव मोड। आप पॉडकास्ट के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं साथ के अंदर, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मैजिक ऑफ द एआई इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो टुडे। सो yep, that's all. I think we'll keep this in like this session short because we started with the things for the AI discussion. मतलब हमने first जो session था हमारा AI discussion पे start किया, second, third, fourth were more about getting that resource well, जो हमने booklets बनाई, जो हमने physiotherapy के बारे में discuss किया, that was more highlight. Yesterday I discussed about low back pain in a detailed manner, and today it was more about ACL rehab, and hopefully like there are some things which you can really use as a physiotherapist. This was more of specifically for the people who are practicing already, जो clinical practice के अंदर है, जो लोग already practice कर रहे हैं and they want to learn. I think they want to evolve. I learned from these things and I thought I should share all these things to you people also. So Melbourne ACL guide, Aspetar ACL rehabilitation guide, Notebook LM, all these things if you combine, if you just go through that with the resources which I just showed you, you will be dealing with most of the cases with the ease. ACL rehab or any kind of rehab is more about planning, prescription, and the clinical decision making at the right time, at the right intensity, and with the right processes involved. अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं, I think you will be doing much better than what being done around you, and how you are really doing your practice. So yeah, we are always in learning process. We are always doing things to grow more, and that's how I think we need to move forward. So yep, that's all. I was thinking that I should share some book suggestions also, which other than the physiotherapy. So just give me a second. I will show you all the things which I am right now reading. Give me a second. So yeah, these are the three books I think I am reading right now. Abhi, it will be present in a mirror mode, I think. तो देख पाओगे नहीं देख पाओगे, and you know that is this is the first book by रामधारी सिंह दिनकर. तो इनका ये बुक है कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र की जो कहानी थी वो एक तरह से, अब this is going out of the context now, but I am mixing up ACL rehab and book suggestion, but that's how that was the purpose of this whole series, that we will be trying
so many things throughout the way. तो ये एक बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए अगर आप हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, अगर आपको पोएट्री पसंद है, आपको चीज़ों को समझना पसंद है थ्रू इन द वे ऑफ पोएट्री, दिस इज द वन ऑफ द बुक आई थिंक एवरीवन once like they should read. And yep, this is the book I was reading today. These are two other books which are totally different in their nature. This is first one, the autobiography of like the biography of Steve Jobs by Walter Isaacson. Like I think it's a biography, or it was kind of an yeah. This is the biography itself, and I read it. I watched a video also because of this, and like because I thought that okay, he was an influential person. He created something which was out of the box. He was an creator. He was a businessman. The backstory of uh, the what was the name? I forgot the name. जो इनके साथ the person who was there to make Wozniak, Steve Wozniak, the story of two Steves. Must recommend it. Go watch the video. Go watch the movie also. That is also great, and I think you will get some value out of it also. So let's click in thumbnail also. I think that will be great thing to go for. We can put it as a thumbnail afterwards. So yeah, okay. That's how content creators work. This is the second thing. Third book is the Thinking Fast and Slow. ये Daniel Kahneman का book है, and this gives you more of understanding how your brain works. The Thinking Fast and Slow represents two ways of our mind, how we really take decisions, how we really work in terms of our mind. ठीक है, रियली ग्रेट बुक. थोड़ा हैवी है, मेरे को भी थोड़ा सा आई थिंक इट वाज लिटिल बिट ऑफ perplexing sometimes because of more of data, because of more of nuances, or some more of tiny details which has it is mentioned. Sometimes it is hard to cope up with the thing, but yeah, it has given me more understanding that how we can think in different mode, how multiple things can affect our judgment, how rational we are in the daily life, many things. I think this will give you more of value into understanding how the brain works or how the mind works in the real life. So yeah, three different books, three different versions of the things, and yep. I was thinking that I will prepare something more in specific from the next session. So do suggest some suggestions. Like if someone is watching this video at the end, try to give some suggestions in terms of that what we can start with, so that I can try that also for sure. And otherwise, it will be great. We are done with the fifth day of live series session, and I'm planning to bring some people from my profession, from journal people, to understand and to discuss some key points which we can really uh, pull out, and we can have some more discussion around those topics also. So yep, what fun is without people? So we'll bring out more people to discuss with. We'll have more conversations around the things, and that's how we're gonna move forward. This was a day 5 of the live session series, and we'll continue with this same enthusiasm and same consistency for the next coming many days. So yep, all good, and have a great sleep again, and we'll meet tomorrow at the 9 p.m. So take care. Have a great day. Bye bye.